अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म इज दैट स्कूल ऑफ थॉट जो कि इस बात पे यकीन रखता है कि जो भी जिस चीज़ का बेस्ट हो उसको जो है वो यूटिलाइज किया जाए। द टर्म प्रैग्मेटिज्म derives its origin from a Greek word pragma that means activity, practice, or action. As action gets priority over thought, pragmatism is also known as expenditure. When we talk about expenditure, it's about belief in practicability or utility, depending upon the truth, reality, goodness, or badness. Basically, when we say about pragmatism, we say that whether anything that is useful, whether that can be applied, whether that can be practiced, is should be used. Pragmatism tend to hold the idea that the truth facts of yesterday needs to be experienced truly today and tomorrow. It idealizes the activity on the basis of its consequences over time frame. In short, it conceptualizes any inference on the basis of changed or changing needs, circumstances, and places. Basically, pragmatism states that if we need to change our strategies depending on the time, we should change. If we need to change our thought pattern according to the circumstances, we must change them. There is nothing like obsolete or permanent, and we keep on changing our uh, school of thought depending on the circumstances. Um, their fundamental start is change. Whatever was true yesterday need not to be true today. The philosophy of pragmatism is predetermined to those ideas and values which result in utility to mankind in certain time, place, or circumstances rather than any predetermined uh, of life. यानी बेसिकली ये बात ये है कि देखिए कोई चीज़ भी परफेक्टली हमेशा के लिए एप्लीकेबल नहीं होती. Depending on situation, depending on circumstances, we need to change our strategies uh, depending on the situation. Pragmatism philosophy is a practical philosophy having no fixed or absolute standard. Anything that works is used. ठीक है, यानी बेसिक इसमें यह है कि जो चीज़ आपको फायदा दे उसको इस्तेमाल करें. Man always creates new values and education should help him in doing so. Being practical in utilitarian school of philosophy, pragmatism has influenced education to the maximum extent. It has tried overcoming the limitation of the other schools like idealism and naturalism and has influenced the world to a great extent. अगर आप pragmatism की बात करें तो इसमें बहुत सारे एजुकेशनिस्ट ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जिसमें पाइट्स है, बाम है, जॉन डेवी है, विलियम जेम्स है, डोरेंट है, शिलर है. ठीक है, ये सारे pragmatism है. According to pragmatist school of thought, experience is the center of the universe. Hence, it lays more emphasis on the ideas and the values that are resulted by the experimental activities. अगर हम बात करें कि pragmatism के मुताबिक एम ऑफ एजुकेशन क्या क्या है, तो नंबर 1 टू क्रिएट द न्यू वैल्यूज. ठीक है, यानी कि ये है कि देखें कि कोई फिक्स्ड एम ऑफ एजुकेशन नहीं होता. वी हैव टू create new values and the acts of the teacher to help himself develop new values. Number 2, to enable the people to gather experience through activity. जब तक आप प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं सकते. सो यू हैव टू परफॉर्म सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू गेन समथिंग. ठीक है, और उसके लिए क्या है कि फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज होती हैं, मॉरल एक्टिविटीज होती हैं, एस्थेटिक एक्टिविटीज होती हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट है टू हेल्प द पीपल टू एडजस्ट विद हिम एंड द सोसाइटी. द अदर इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म इज टू हेल्प द पीपल to make adjustment with himself and the society. फिर उसके बाद है to reconstruct his experience. Every individual has to solve different types of complex uh, problems in his life. So another important aim of education according to pragmatism is to enable the people to form such an outlook about life as it can help to tackle successfully the different problem is life in future. फिर इसके बाद जो डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो सोशल है, साइकोलॉजिकल है, स्पिरिचुअल है, एस्थेटिक है, उसमें ओवरऑल जो ग्रोथ हो रही है उसको डील करना भी एक इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन है.
तो कौन कौन से एम है अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्ट स्कूल ऑफ थॉट? टू क्रिएट न्यू वैल्यूज, नंबर 2 to enable people to gather experience through activity, number 3 to help the people to adjust with him and the society, number 4 to help the people to reconstruct his experiences, number 5 to make all around development of the people. फिर अगर आप प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो एक्टिविटी जो है ना वो किसी भी एजुकेशनल प्रोसेस के सेंटर पर जो है वो मौजूद है। एक्टिविटी लाइज एट द सेंटर ऑफ ऑल एजुकेटेड प्रोसेस, द बेसिस ऑफ ऑल टीचिंग इज द एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, एजुकेशन क्या है? प्रिपरेशन फॉर लाइफ है। और प्रैग्मेटिज्म ये है कि इंसान को सोशली एफिशिएंट बनाती है। ठीक है, and there are two main principles. Number one, education should have a social function, and number two, education should provide real life experiences to the child. अगर हम बात करें कि एजुकेशन के प्रैग्मेटिज्म के मुताबिक एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो नंबर वन, every continuous experience or activity is educative, and all education in fact resides in having such experience. But continuous growth in experience is not the whole education. Education is something more. It is constant reorganizing or reconstructing of experiences. Basically, education is reorganizing or reconstructing our experiences. हम जो जो वक्त गुजरता जाता है, जो जो हमें नई नई सिचुएशन से डील करना पड़ता है, तो हम अपने एक्सपीरियंसेस को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। नंबर टू, प्रैग्मेटिज्म प्रोवाइड्स डेफिनेट एम्स ऑफ एजुकेशन। द स्टूडेंट इज प्रिपेयर्ड टू लिव इन ए सोसाइटी एंड लर्न स्किल्स एंड एटीट्यूड। नंबर थ्री, द टीचिंग मेथड्स आर बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। द प्रोजेक्ट मेथड इज द contribution of pragmatism to modern education. The pragmatism encourages a democratic way to learning through purposeful and cooperative projects and activities. फिर utility in the educative process is the first criteria. The school is expected to provide learning experiences that are useful. ये सारे जो हैं वो डिफरेंट एजुकेशन में जो है वो इसकी कंट्रीब्यूशन है। फिर अगर आप करिकुलम के हवाले से बात करें तो करिकुलम जो है वो प्रैग्मेटिज्म के मुताबिक फॉलोइंग प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होना चाहिए। नंबर वन, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। According to the principle of utility, only those subjects should be taught that are based on activities and experiences. And every curriculum should include activities and experiences. Subjects like language, physical well-being, physical training, geography, history, science, agriculture, and home science for girls should be included. Number two, principle of interest. According to this principle, only those activities and experiences where the child take interest are of four varieties. Number one, interest in conversation. The child takes interest in conversation about that thing. Number two, interest in investigation. He or she has curiosity to know about that thing. Number three, interest in construction. And number four, interest in creative expression. Keeping these varieties of interest, we should focus on writing, counting, arts, craft work, natural science, and the other practical work of simple nature. Number three, principle of experience. The third principle of pragmatism. Pragmatic curriculum is a child's activity, vocation, and experience. All these three should be closely integrated. The curriculum should consist of such varieties of learning experiences which promote original thinking and freedom to develop social and purposeful attitudes. Number five, principle of integration. Pragmatic curriculum deals with the integration of subjects and activities. We want to construct a flexible, dynamic and integrated curriculum जो कि बच्चे को with respect to society जो है वो सोसाइटी की डिमांड्स और एक्सपीरियंसेस के मुताबिक जो है वो फुलफिल करने की सलाहियत बच्चे में डेवलप कर सके। टीचर की बात करें तो टीचर जो है वो स्टूडेंट सेंटर, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे, ठीक है, और उसको स्टिमुलेट करे कि वो जो है वो खुद क्रियोसिटी उसके अंदर डेवलप हो और वो अपनी इननेट क्वालिटीज को पॉलिश करके जो है वो अपने स्किल्स को एनहांस कर सके। ये सारा जो है वो इसका इम्पोर्टेंट प्रैग्मेटिज्म का रूल होता है। तो अगर आप इसकी कंक्लूजन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म, एजुकेशन इज नॉट द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी as advocated by the idealist. It is the philosophy which emerges from educational practices.